Hello, everyone, and a very good morning. Can you please confirm if my voice is clear? Can you please let me know if my voice is clear? Meanwhile, I am sharing my screen. Okay, ji, thank you. Please let me know if your screen is visible to you. Okay, thank you. All right, so we are done with research and all its essential elements. That was what we needed to know in order to work on to our report. So today we are officially starting our report, and let me see how many are there. Okay, we are 15 and good to go. So let's start. Okay, so let's start with the report. In this slide, we would be going with the report and all its essential elements, right? What is the report? How do we write it? And how do we plan the report? What are the essential parts of a report? What are the types of report? We are not concerned more on the types over here, but we are concerned more over here that how to write a report and what are the essential elements of the report and what do we actually write into those essential elements. So first of all, report. You have heard the word report a lot of times in your life. So how could you relate report? What is the report to you? आपने कभी इस वर्ड को यूज किया है द वर्ड रिपोर्ट हैव यू एवर यूज्ड दिस वर्ड रिपोर्ट in your common life? I'm not talking about report writing. I'm talking commonly that have you ever used the word report in your common life? Yes, medical report. Okay, and what else? Medical report and what else? Project report, report card. Okay, educational report, test report. Okay, investigation report. Okay. Okay, so everyone has encountered, some type of report in their life. Death report, annual profit loss report. Okay, so everyone has encountered report that is research report or medical report or project report, educational report. So, what do you think? What is the common in all these reports? What is common? Why are we calling all these a report? Why are we calling all these documents a report? Or what do you think is common in all these? What do you think? What is common in all these? Details, summarize, detail of topic, okay.
Details. Structure. Structure may not be the common because structure of every report is different. Medical report would be entirely different than educational report, right? Key factors. Okay, answer to the questions. Okay. Yes, details. Details can be, you can say details are something that is common because every report is informing you about certain thing, right? Every report is either recommending you something or every report is giving you certain kind of information, right? Giving information is the core objective of a report. रिपोर्ट करना क्या होता है दैट पर्सन इज रिपोर्टिंग मतलब बताना कोई इंफॉर्मेशन देना हम अपने दोस्तों को बोलते हैं ना हाँ यार दे रिपोर्ट क्या हुआ मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन कि जो हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन दो यार तुमने तो रिपोर्ट ही नहीं दी उसकी मतलब उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है सो द कोर meaning or the core concept is information. If it is a medical report, information related to that medical phenomena. Educational report, information related to that educational phenomena. In terms of scientifically report, right, or the report which we are going to work on, or normally कोई भी report हो उसकी definition हमारे पास क्या है? A report is a sharp and concise document which is written for a particular purpose and audience. If you see all the reports which you have mentioned, that is a sharp and concise document, right? Report क्या होती है? Concise होती है. If you look at the medical report or educational report, you won't find details or you won't find it of 8 to 10 pages. You know, it would always be of 1 or 1 to 2 pages, and it is not written for a wider audience. It has also a particular purpose and audience. आपकी मेडिकल रिपोर्ट अगर है तो उसकी ऑडियंस सिर्फ आप हैं लिमिटेड है और अगर किसी और की है तो वो आप हैं लिमिटेड है अगर एजुकेशनल रिपोर्ट है किसी एक इंस्टीट्यूट की तो वो उसकी पर्टिकुलर है और ऑडियंस उसके लिमिटेड है रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन फॉर पर्टिकुलर ऑडियंस अब उसका हर किस मतलब ये नहीं कि ऑडियंस एक या दो होंगे हो सकता है रिपोर्ट एक मुल्क की रिपोर्ट बनाई गई हो जब एक कंट्री की रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो पूरी दुनिया की रिपोर्ट नहीं होती उसका पर्पस और ऑडियंस स्पेसिफिक होते हैं it generally sets out and analyzes a situation or problem, often making recommendations for future actions. अब इसमें क्या होता है कि हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देते हैं ताकि आगे कोई एक्शन लिया जाए अब आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी क्या कर रही होती है आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कर रही होती है ताकि फ्यूचर की रिकमेंडेशंस बन सके आपकी एजुकेशनल रिपोर्ट हो या आपकी कोई भी रिपोर्ट हो वो आप इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम होता है जिसको आपने एनालाइज किया है और अब उसकी बुनियाद पर आप डिसीजंस लेंगे या रिकमेंडेशंस लेंगे इट इज़ अ फैक्चुअल पेपर एंड नीड्स टू बी क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड ऑब्वियसली एवरीथिंग तब आप एप्लीकेशन में भी वही बात लिखें आप ऐसे में भी वही बात लिखें और आप लेटर में भी वही बात लिखें द प्रॉब्लम इज नॉट कि आप बात क्या लिख रहे हैं it is right if its structure is right. Later ka structure is entirely different than application and application structure is entirely different than essay structure. आप बात भले यही करें कि हमारे यहाँ लाइब्रेरीज का प्रॉब्लम है और हमें लाइब्रेरीज चाहिए अगर आप वो ऐसे लिखते हैं आप वो एप्लीकेशन में लिखते हैं या आप वो लेटर में लिखते हैं कंटेंट आप वही लिख रहे हैं द ओनली डिफरेंस इज द स्ट्रक्चर so you need to take care of structure when you are writing a report. The scope and style of report varies widely. Definitely, there are certain types and purposes of reports. It depends on three key factors the report's intended audience, the report's purpose, and the type of information to be communicated. अब रिपोर्ट की जितनी भी टाइप्स हैं वो तीन चीज़ों पे होती हैं सबसे पहले क्या है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं आप इसको क्यों लिख रहे हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं सो रिपोर्ट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट यू राइट फॉर सर्टेन ऑडियंस
specifying certain problems, and on the basis of those problems you also recommend certain solutions. रिपोर्ट में सिर्फ आप जो हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर नहीं देते, आप उसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को जब सॉर्ट आउट करते हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी आप देते हैं, रिकमेंडेशंस आप देते हैं। रिपोर्ट्स मोस्टली जो हम पढ़ेंगे, राइट, जो हमारी रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे जो बनाएंगे उसमें हम सिर्फ एक प्रॉब्लम को रिपोर्ट नहीं करेंगे। रिपोर्ट का मतलब क्या है, प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना, इन्फॉर्म करना, आगे बताना। तो हम इसको सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते, हम जो है उसका फिर सॉल्यूशन भी देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, दिस कुड बी द पॉसिबल रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस। I want you to reread the slide once and then let me know if these things are clear. Let me know if you are done reading with this slide and if it is clear. If you have got any question regarding this slide, please let me know. All right, so we are clear. Now the question arises, why do you want, or why do we need to understand a report or work onto a report or learn about report? What is the importance of report? Why do we write reports? Why reports are part of our curriculum, and why one should learn report writing? What are the things we're gonna learn when we are learning report writing? So we are going to go in depth of the importance of report writing. First of all, it says decisions are very often taken on many controversial and problematic issues based upon some reports. Until and unless you don't have got some in-depth results or in-depth information regarding certain issues, you cannot solve them. So first of all, if you are working for any firm or if you are working anywhere, you have to take sometimes certain controversial decisions. And how would you take them? You would be taking on the base of some reports. Reports क्या होंगी? Facts and information and figures होंगी. एक कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो कंट्रोवर्शियल है और प्रॉब्लमेटिक है, हाउ वुड यू सोल्व और हाउ वुड यू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी। आप when you are an engineer and when you are going in industry, आपका काफी टाइम जो है रिपोर्ट्स बनाने में गुजर जाता है। यस, इट मे बी द स्ट्रक्चर मे बी इंटायरली डिफरेंट देन द स्ट्रक्चर आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, बट मेक श्योर कुछ ना कुछ उसमें से वहाँ जरूर होता है। हो सकता है कि आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें आप मेथोडोलॉजी पे नहीं इतना फोकस करें बिकॉज इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, योर बॉस ओनली नीड द रिजल्ट्स। तो आप सिर्फ उस रिपोर्ट में रिजल्ट्स देंगे, बाकी सारी चीजें नहीं देंगे। हो सकता है योर बॉस नीड्स लिटरेचर रिव्यू कि उससे पहले इस फील्ड में क्या हुआ है या लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो आपको हो सकता है कि सिर्फ लिटरेचर रिव्यू देना पड़े। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह के प्रॉब्लम है और किस तरह से उनके सॉल्यूशंस आते हैं। तो इस तरह के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। Many relevant and material facts about the problem and organization can be known. Being a boss or being a CEO,
You are very much busy in other things. So आप क्या करते हैं कि जो आपके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं आप उनको रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोलते हैं। इससे क्या होता है कि रिलेवेंट फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलते हैं। और रिपोर्ट्स कुछ बनती हैं डेली बेसिस पे, कुछ वीकली बेसिस पे और कुछ मंथली बेसिस पे। उससे क्या होता है कि यू रिमेन अपडेटेड अबाउट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। A report has a documentation value. It is a source of reference, evidence and history. अब रिपोर्ट क्या होती है? एक रिटन फॉर्म है। अब रिटन फॉर्म मे बी इट इज इलेक्ट्रॉनिक और मे बी इट इज इन अ प्रिंटेड फॉर्म, but still it is a written form, so it has a documented value, right? अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है या कुछ भी होता है तो यू कैन यूज इट एज एविडेंस और यू कैन रिफर इट, राइट? एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस हिस्ट्री। हो सकता है एक साल की पहले की रिपोर्ट्स और इस साल की रिपोर्ट्स को आप कंपेयर करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली रिपोर्ट क्या है, अगर आपने उस रिपोर्ट को नहीं रखा होगा या नहीं बना होगा, सिर्फ अगर आपने किसी को बोल दिया कि इस बार जो हमारा नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ है, अगर अगला बंदा भी आपको वर्बली बता देता है, तो नेक्स्ट ईयर शायद जब आप इन चीज़ों को कंपेयर करें तो आपके पास कोई अथेंटिक चीज़ ना हो उसको कंपेयर करने के लिए। बट इफ यू आर हैविंग रिपोर्ट दैट इज रिटन, either it is electronic or it is in a printed form and it is available at your end, you can compare both the reports of the previous year and this year very well, and you can reach to the conclusions. Job and professional arena, 70 to 80% of your time in writing or interpreting reports. When you are a professional and into a job, trust me, half of your work is just around report writing. Either you need to write the reports or you need to interpret the reports. Interpret का मतलब क्या है? To understand and to gather information or to deduce the information from the reports. Reports को समझना, reports को पढ़ना, that is called interpreting, right? तो आपको क्या करना होता है? आपको रिपोर्ट्स बनानी भी होती हैं और हो सकता है अगर आपका दूसरा कलीग रिपोर्ट बना रहा है तो हो सकता है कि आपको वो बॉस को रिपोर्ट करना पड़े, तो आपको वो रिपोर्ट समझना भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Then we have sometimes reports are not written by a single individual. Committees are formed in which you will be an integral part. So sometimes it's not like it that we have to make a daily report or a weekly report. जब हम yearly report बनाते हैं या हम 5 सालों के लिए report बनाते हैं, or even though sometimes what happens that the problems are really bigger than to handle by the one person, so we have then committees or we make groups in order to form the report. Then you could be the part of it and you could be asked onto any aspect. If you don't know any aspect, definitely then it would be difficult for you and others to carry you with them in their group. How would you work? Okay, for example, if they are asking you that they are collecting the data and you are supposed to analyze that data, if you even don't know how to analyze that data, how would you work into that group? You would always feel like I'm lagging behind, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो सीखा ही नहीं है। जबकि आपकी जितनी भी जॉब होती हैं उनमें आपका सबसे ज्यादा काम होता है रिपोर्ट राइटिंग का। आपके ही कुछ सीनियर्स हैं जो कि सिर्फ इंटर्नशिप ही करने गए थे, तब इंटर्नशिप के ड्यूरिंग भी उनको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती थी। A report trains you as a writer in a very planned and orderly manner to deal with procedures and logical presentation of ideas and information. For now, I feel so happy that you learn this actually, that you know how to write in a planned and structured manner and how to present ideas in a logical manner. So when you learn this subject, report writing, you learn all these things, then how to write scientifically and how to take care of methods, methodologies, and how to present all our ideas and information very well. Then this is one of the most important aspect of report writing. That is, report writing develops the power of discrimination, organization, judgment, and the communication. Definitely, when you are collecting
writing facts and figure, you would be discriminating what is right, what is wrong. You would be organizing, judging, and then finally you would be communicating all the information to the one you are making report for. So report develops a lot of skills in you. Even though when you would be learning report writing, maybe unconsciously consciously you don't feel that you are learning a lot of good things, but unconsciously you would be feeling a bundle of good things if you are working with the pace. I want everyone to read the slide once and then let me know if you guys have any question. I want everyone to read all these points at least once and then let me know if everything is clear. Second point. Second point is that a lot of information can be known, right? When you are making a report का actually काम होता है कि आप information collect करें जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, और आप रिकमेंडेशंस एंड सॉल्यूशंस दें. जब आप रिकमेंडेशन सॉल्यूशंस देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलती हैं. यू कम टू नो दैट what are the real facts and what are the real facts and figures. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है. बीइंग अ बॉस आप हर एस्पेक्ट पे नहीं देख सकते जाके, और इन सारी चीज़ों को टाइम लगता है. तो रिपोर्ट में क्या है, आपको जो है फैक्ट्स मिल जाते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. आपको पिछले 3 महीने में क्या हुआ है हर दिन नहीं देखना है, आपको 3 महीने की रिपोर्ट देखकर ही पता चल जाएगा. तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको ये ज़रूरी नहीं है इफ़ यू आर अ बॉस आप 3 महीने हर दिन हर रोज़ बैठें और देखें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है. अगर आप 3 महीने की रिपोर्ट देखेंगे तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीने में क्या हुआ है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 2, कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन मिलती है, फैक्ट्स एंड फिगर मिलते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. रोल नंबर, प्लीज रिपीट द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination का मतलब है कि when you are working on to report writing, you would be discriminating a lot of things. Discrimination का मतलब है you would be analyzing. In other words, analyzing. आप analyze करेंगे what is important and what is not important. यहाँ पर discrimination का मतलब ये नहीं है कि आप different मतलब उस तरह के जो हम differences समझते हैं, ये एजुकेशनल डिफरेंसेस हैं जो आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस डेटा इज व्हाट इंक्लूडिंग एंड दिस डेटा इज नॉट व्हाट इंक्लूडिंग. आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, और व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड.
आप ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि दिस इज व्हाट नीड्स टू बी एट द फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज व्हाट नीड्स टू बी एट द सेकंड एंड थर्ड प्लेस। आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चलता है वो एक डिस्क्रिमिनेशन पे चलता है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज राइट, व्हाट टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड। I hope this word is clear. If it is not, please let me know. All right, roll number 52. If second point is clear, please let me know. If it is not, still let me know so that I can clear it again. I hope everyone has read all these points, and trust me, it is really important to know what is the report and how to write the report. And I'm very much sure, even I can bet you that if you are going for your masters or if you're going for PhDs, nobody is going to teach you research writing like this, because even I was a student, nobody taught me research like this. All I had to do by myself. And even though I'm not in any organization, you could say a field organization or any business where I can make reports of what, but still being a teacher, I have to teach the reports. See, when I learned it during all these things, and now I'm teaching you guys. Even though I believe if anyone from you has gone for internship, they may tell you that yes, even during that internship, they were making reports. And this is very much important for you all to learn reports, because this is ultimately going to be the part of your job. All right, let's move ahead. So here we have what makes a good report. सारे रिपोर्ट्स लिखते हैं, बट सम रिपोर्ट्स आर वर्थ इवेल्युएशन, और वो हमें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन देती हैं, एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. So what makes a good report is a well written report will demonstrate your ability to understand the purpose of the report brief and add it to its specifications, gather, evaluate, and analyze relevant information, structure material in a logical and coherent order, present your report in a consistent manner, make appropriate conclusions that are supported by the evidence and analysis of the report, make thoughtful and practical recommendations where required. अब एक अच्छी रिपोर्ट में क्या चीजें होती हैं? First, it says understand the purpose of the report brief and adhere to its specifications. आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, और जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं सिर्फ आप उन्हीं पे रहें, आप इधर उधर की बातें उसमें ना करें. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के फीमेल वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर आपने रिपोर्ट देनी है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं वो किस टाइम पर आती हैं, किस टाइम पर जाती हैं, वो क्यों एब्सेंटीज जो है उसमें इतनी हो रही है, तो आप सिर्फ उन्हीं उसी पर्पस पे रहेंगे, उसी स्पेसिफिकेशन पे रहेंगे. बाकी जो है आप इधर उधर की बातें उसमें नहीं करेंगे. दैट इज कॉल्ड अ गुड रिपोर्ट, दैट इज स्पेसिफिक, राइट? जो स्पेसिफिक हो और उसका पर्पस क्लियर हो. You have to gather, evaluate and analyze relevant information. आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है या उसको evaluate करना है, analyze करना है, वो relevant information होनी चाहिए एक अच्छी रिपोर्ट में. irrelevant information नहीं होनी चाहिए. आपका बॉस या आपका जो भी immediate बॉस है, वो जब भी रिपोर्ट पढ़ेगा, he or she would appreciate if things are relevant. अगर इररिलेवेंट चीजें होंगी तो वो उसको ज्यादा एम्बिग्यूस करेंगी, समझ से बाहर कर लेंगी, और जो आपका मकसद होगा वो शायद पूरा नहीं होगा. हो भी जाए तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा इन ऑर्डर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन. Structure material in a logical and coherent order. This is what we know, that whatever we have been learning, coherence हमारी जान नहीं छोड़ रहा. So whatever it is, you have to make it logical and everything should be coherent. Ideas हो या आपकी grammar हो, everything should be connected.
प्रेजेंट योर रिपोर्ट इन अ कंसिस्टेंट मैनर। आपको रिपोर्ट जो है एक कंसिस्टेंसी में, कंसिस्टेंट मैनर में देनी है, एक ऑर्डर में देनी है, एक लॉजिक में देनी है, राइट, और एक कंसिस्टेंसी के साथ देनी है। Make appropriate conclusions that are supported by the evidence and analysis of the report. हम हमेशा conclusions जो देते हैं, most of the times I told you क्या होता है, हम jump करते हैं conclusions पर, because हमें इसमें interest नहीं होता कि आपने किस तरह से किया है और क्या procedures apply किए हैं। तो वो आप जो conclusions करें, make sure कि वो उसमें evidence हो और आपने जो भी analyze किया है वो उसके हिसाब से हो। Make thoughtful and practical recommendations where required. रिपोर्ट का जो कोर कॉन्सेप्ट है, कोर पर्पस है, इज टू मेक रिकमेंडेशंस। सो वेन एवर यू आर मेकिंग एनी रिपोर्ट, मेक श्योर कि आप उसमें जो है इस तरह की रिकमेंडेशंस दें जो कि प्रैक्टिकल हो, थॉटफुल हो, और अगला जो उन रिकमेंडेशंस को पढ़े तो उसको लगे भी कि यस, इस जो प्रॉब्लम को हमने एनालाइज किया है उसके लिए ये रिकमेंडेशंस काम कर सकती हैं। और आप तभी रिकमेंडेशंस देंगे जब आपके बॉस जो है वो आपसे उसके लिए बोलेंगे, एल्स यू आर नॉट सपोज टू गिव रिकमेंडेशंस। बट मोस्टली हर रिपोर्ट में हम रिकमेंडेशंस देते हैं, बगैर रिकमेंडेशन के वी डोंट मेक अ रिपोर्ट। I want everyone to read the slide once and let me know if things are clear or if you have any question. Please let me know if the slide is clear so that we can move ahead. Guys, please let me know if things are clear because I think I'm not receiving your text. All right. Okay, ji. Then we have types of report. So we have basically two main types of report, and under which then we have different types. Clear, clear, clear. Okay, ji. So then we have different types of reports. So this is how we have distinguished between the types, oral and the written. So the word oral is very much clear and the written is very much clear. I need not to explain the difference between what is oral and what is written because all of you know very well. Oral means verbal and written means in sign and symbols that we normally use as a language. So in oral, we don't have any other subtype, but in written, we have two subtypes. One is formal and the other one is informal. So in oral, it is face-to-face communication, cannot be reproduced. Definitely, it is not into a written form.
so that oral cannot be reproduced again. As I told you, if it is an oral form, तो आप भूल जाते हैं या आपको वो एग्जैक्टली वो अकाउंट आपके पास नहीं रहता. तो जब आपके पास रिटन होता है तो वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होता है. सो ओरल रिपोर्ट्स क्या होती है हमारी? फेस टू फेस कम्युनिकेशन. एंड रिटन क्या है? मोर एक्यूरेट एंड परमानेंट, कैन बी रिफर्ड बैक. और जब हम इस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रहें और हमारे पास जो वो हो, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हो वो, और हमारे पास वो रहें ताकि हम उनको कंपेयर भी कर सकें, उनको रेफर बैक भी कर सकें. तो हमारे पास हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. हमारे पास दो टाइप्स हैं. नंबर वन इज फॉर्मल एंड द अदर वन इज इनफॉर्मल. So what do you think? Which one are we going to use in our reports? Formal, we are going to use formal reports or informal reports? What are we going to use? What do you think? Which report would we be using? Formal or informal? Formal, formal, formal reports, formal, formal, formal. Okay, definitely. Informal क्या होती है कि उसका कोई प्रोसीजर नहीं होता, उसका जो है कोई एक लेआउट नहीं होता. अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये फला इंफॉर्मेशन चाहिए और यार वो मुझे बताओ तो सही, आप सिर्फ एक पेपर पे लिख के यार 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 32 का ये प्रॉब्लम, 28 का ये प्रॉब्लम है, टोटल 32 है हमारे पास, 30 अभी आए हुए हैं, तो ये, तो वो ये जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं इनफॉर्मली, ठीक है, उसका कोई लेआउट नहीं होता, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज इनफॉर्मल, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता. फिर हमारे पास है फॉर्मल. फॉर्मल में हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं. हमारे पास नंबर वन है इंफॉर्मेशनल, नंबर टू है इंटरप्रेटिव एंड नंबर थ्री इज रूटीन. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो होती है उसमें हम किसी भी इवेंट का या किसी भी प्रॉब्लम की सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है. वो सिंपली है रिपोर्टिंग के क्या हुआ, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं हम रिपोर्ट में कि इतने लोग आए थे और ये प्रॉब्लम हुआ है. दिस इज व्हाट यू आर रिपोर्टिंग, यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन. दूसरा हमारे पास टाइप है इंटरप्रेटिव. इंटरप्रेटिव हमारे पास जो है इज इन डेप्थ. इंटरप्रेटिव इज इन डेप्थ और वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बनता है और उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं और रिकमेंडेशंस भी देते हैं. इंफॉर्मेशन इज द बेसिक वन. इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर हम बनाते हैं इंटरप्रेटिव रिपोर्ट. उसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं और हम एनालिसिस देते हैं, उसमें हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से हो रही है और उसमें हम क्या जो है चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है जी. और उसके बाद है हमारे पास रूटीन रिपोर्ट्स. अब रूटीन रिपोर्ट्स क्या है? रूटीन रिपोर्ट्स आर द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दैट आर बीइंग रेगुलरली मेड एंड प्रेजेंटेड एट द वर्क. आपकी रोज की जो रिपोर्ट है वो रूटीन रिपोर्ट है. आपकी जो रूटीन में 3 मंथ्स के बाद जो बनती है या 6 मंथ्स के बाद जो बनती है रूटीन रिपोर्ट, वो एक हमारे सिस्टम को रन करने के लिए एक रूटीन में रोज की रोज बनती है. अब फैक्ट्री में क्या काम हुआ, कितना जो है एक्सपेंसेस के कितने हुए हैं, कितने प्रोडक्ट्स आए, कितने प्रोडक्ट्स बने, कितने प्रोडक्ट्स निकले, ये रोज की रोज हमारी रिपोर्ट बनती है. दैट इज कॉल्ड अ रूटीन रिपोर्ट. उसमें हमारा जो है फिर रिकमेंडेशंस का ये वो काम नहीं होता, पर उसमें जो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उस पे वो रेगुलर बनती है. तो जो रेगुलर बेसिस पर हमारे पास बनती है दैट इज कॉल्ड रूटीन रिपोर्ट, जो एक रूटीन होती है कि दैट हैज टू. हमारी इवन एनुअल अगर रिपोर्ट है, हमारी ऑडिटिंग की रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट है, प्रोडक्शन रिपोर्ट है, दैट इज ऑल रूटीन रिपोर्ट, क्योंकि उसका एक रूटीन है दैट हैज टू बी मेट.
अब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको तभी बनाएंगे आप जब भी आपको किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और इंटरप्रेटिव आप तब बनाएंगे जब आपको उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसी प्रॉब्लम की इन डेप्थ जो है स्टडी चाहिए होगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम भी चाहिए होगा, उसकी एनालिसिस भी चाहिए होगी, और आपको उसके लिए रिकमेंडेशंस भी चाहिए होंगी। I hope the difference between three is clear. If it is not, please let me know. And yes, please let me know this. आपको क्या लगता है कि जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आप इंफॉर्मेशनल बनाएंगे, इंटरप्रेटिव बनाएंगे, या रूटीन रिपोर्ट बनाएंगे? Which report are you going to make? And if the difference is clear, please let me know. If it is not, please ask me the questions. Repeat the second type. नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई थी। Formal key types. Please repeat the types of formal report. We will make interpretive report based on job status. Clear, create information. According to need, interpreted. चलें जी, मैं आपकी ये फॉर्मल की जितनी भी थ्री टाइप्स हैं उनको फिर मैं जो है रिपीट कर देती हूँ. All those who are saying interpretive report, you guys are very much right. We are going to work on to interpretive reports. तो हम जो है रिपोर्ट्स कौन सी बनाएंगे? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. वी आर गोइंग टू मेक इंटरप्रेटिव रिपोर्ट्स. तो मैं सबको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो है आप जस्ट उसको बनाते हैं इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन कि आज जो है कितने प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बने हैं. दैट हैज टू बी इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट्स, सॉरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में वो आने हैं कि आज क्या हुआ है. इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या होता है कि चीज़ों की सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है और आपने कुछ भी उसमें नहीं करना होता. सिंपली इट इज स्टेटिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट्स इट. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, जब आप उस रिपोर्ट को इन डेप्थ लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप रिकमेंडेशंस देते हैं. अगर आज सेल कम हुई है, आपकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ये आया है, तो आप उसको एनालाइज करते हैं कि आज ऐसा क्यों हुआ है, उसके रीजंस क्या हैं, और उसकी बुनियाद पर आप रिकमेंडेशंस देते हैं कि अगर ऐसा हो तो शायद हमारी सेल्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ सके. तो इंटरप्रेटिव जो है इन डेप्थ स्टडी है एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन. और रूटीन में क्या है? रूटीन की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो रेगुलर रिपोर्ट्स होती हैं जो डेली बुनियाद पर या आपकी वीकली बुनियाद पर बनती हैं. अब डेली कितना जो है खर्चा लगा, कितने जो है आपकी फैक्ट्री से जो आपके स्टॉक था उसमें से कितना स्टॉक निकला और कितने प्रोडक्ट बने हैं, वो जो डेली की रूटीन की रिपोर्ट्स बनती हैं दैट इज कॉल्ड रूटीन रिपोर्ट. वो आपकी डेली की बनती है, वो आपकी वीकली भी बन सकती है, मंथली भी बन सकती है. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है. दैट कुड बी, वो जो रूटीन की रिपोर्ट है आपकी, वो दैट कुड बी इवन कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल एंड इंटरप्रेटिव की बन सकती है, बट मोस्टली इंटरप्रेटिव आपकी रूटीन में नहीं आती, क्योंकि जब आपकी इंटरप्रेटिव आती हैं तो आप जो है मसले को बहुत डिटेल से देखते हैं, और जो आपकी रूटीन की होती हैं वो आप सिर्फ इंफॉर्मेशनल एंड क्रिप्स एंड टू द पॉइंट होती हैं. तो इंफॉर्मेशनल जो है वो कभी भी बन सकती हैं, इंटरप्रेटिव कभी भी बन सकती हैं. रूटीन का क्या है कि वो एक फ्लो में होती है, कंसिस्टेंट होती है, जो बनती रहती है. इंफॉर्मेशन में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, पर जब उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप चीजों को एनालाइज करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव. I hope the difference between the three is clear now. If still it is not, please let me know. I will repeat again. और हम जिस रिपोर्ट पे काम करेंगे या हम जो रिपोर्ट बनाएंगे दैट वुड बी इंटरप्रेटिव रिपोर्ट. We won't be simply informing, but we would be analyzing it and we would be providing recommendations too.
All those who had problem with types of formal report, please let me know if the report types are clear now. 7744, can you please clear? Okay, Ji. 77, can you please confirm me if the types of the report are clear? All right, let's move ahead. Then we have structure of a report कि एक रिपोर्ट में क्या चीजें होती हैं. Let's see. अभी हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या होती है, फिर हर उस चीज को जो है रिपोर्ट की हम इन डेप्थ देखेंगे. सबसे पहले रिपोर्ट में आता है आपका टाइटल पेज. ठीक है जी. अभी मैं इनमें से किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट वांट यू टू नो व्हाट इज जस्ट द पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट. उसके बाद हम वन बाय वन, फिर वो टाइटल पेज हो या वट जो भी अभी आगे आने वाला है, one by one we would be explaining everything, we would be going into the deep of everything, and we would be analyzing everything. Then we have acknowledgement. After title page we write acknowledgement. After writing acknowledgement we write table of contents. After writing table of contents we write list of illustrations. List of illustrations में भी आपके पास तीन चीजें आती हैं. What are these? List of abbreviations, list of figures, और list of tables and list of appendices, right? और उसके बाद आपके पास आता है abstract. अब ये सारी चीजें हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको नहीं पता हो. और even though if you may know but you don't know how to write it into a report, so then we write abstract, and then we write introduction, then we write body, then we write conclusion, and then we write reference, and then we write appendix, right? हम क्या करते हैं कि ये सारी चीजें जो है एक रिपोर्ट में हम लिखते हैं, जिसमें टाइटल पेज होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड अपेंडिक्स. अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, ये सारी डिपेंड करती हैं कि इनकी लेंथ क्या है. बट एब्स्ट्रैक्ट भी आपका एक पेज पर आता है. इंट्रोडक्शन का पूरा आपका एक चैप्टर बनता है. आपकी इस बॉडी के अंदर, जो रिपोर्ट की बॉडी है उसके अंदर 3-4 चैप्टर बनते हैं. कंक्लूजन का अलग से एक चैप्टर बनता है. रेफरेंसेस का सेक्शन आपका अलग से बनता है और फिर अपेंडिक्स आपका अलग बनता है लास्ट में, राइट? दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ sorry a report. This is how we structure a report. और जितनी भी रिपोर्ट्स आप बनाएंगे और जो भी रिपोर्ट बनाएगा उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनको वन बाय वन समझेंगे और सीखेंगे. बट बिफोर हम इनको वन बाय वन समझें और सीखें, आई वांट यू टू रिसर्च एनी research paper or thesis from your field in PDF or doc and evaluate its part. आप अभी क्या करेंगे, आप अपनी फील्ड में से कोई भी रिसर्च पेपर या थीसिस को गूगल से डाउनलोड करें और देखें कि उसमें ये सारी चीजें हैं या नहीं है. वो एक रिसर्च है, ठीक है? एक रिपोर्ट जिस तरह एक रिसर्च का पार्ट है, तो वो रिसर्च पेपर या थीसिस भी एक रिसर्च है. आई वांट यू टू सी कि उसमें भी ये सारी चीजें हैं या नहीं है. यू गॉट 5 मिनट्स. आप किसी भी पेपर को या थीसिस को जो है डाउनलोड करें या उसको वहीं पे ऑनलाइन ही खोलें और आप उसमें देखें कि ये सारी चीजें उसमें हैं या नहीं है. यू गॉट 5 minutes to do it. Search any research paper or thesis from your field in PDF or doc and evaluate its part. आप किसी भी लिखें, आप लिखें रिसर्च पेपर फ्रॉम केमिकल फील्ड और थीसिस फ्रॉम केमिकल फील्ड और केमिकल इंजीनियरिंग, तो वो आपको ढेर सारे रिसर्च पेपर और थीसिस दे देगा. आप वहीं उसको ऑनलाइन देखें और उसमें इसकी हेडिंग्स देखें कि इससे मिलती जुलती हेडिंग्स हैं या नहीं है. You got 5 minutes and then I will be asking you your roll number wise and then I'll be marking attendance. You got 5 minutes, please do it. Go search for any paper, write research papers from a chemical engineering field or thesis from chemical engineering field. It will give you a number of things and then online ही उसको खोलें और उसको देखें कि उसमें ये parts हैं या नहीं है, उसमें कोई different parts हो.
हो सकता है उसमें you find something new which we have not studied, so we can make it the part of our slide. Please evaluate. You get 5 minutes, and then I'll be asking you to share roll number wise. Ma'am, there is too much network problem here. I'm taking classes hardly here. I'm trying my best. If it could, I will answer. That's all okay. Try to download it, but you can watch it online to see if you can have access. But if you're not having access right now, you can do it later on and then you can let me know. Guys, I hope you are looking at your research papers and the thesis from your field, and you might have come to know that there are a lot of things that are similar: acknowledgement, title page, abstract, introduction, and maybe there are certain things which you think are not. For example, in body, we have literature review, right? And then we have methodology, we have results, discussions, we have these are the four chapters which we have under the term body. Okay, guys, let me know. Okay, everyone, let me know if you have found something and if you have seen certain similarities or differences. Please let me know.
Okay, guys, please let me know if you have seen certain similarities and differences. I would like to know. All headings are present, but sequence is different. Okay, I want everyone to inbox me, I mean, personally over MS Teams, all the papers which you are reviewing. Please inbox me the papers which you are reviewing. If not now, later on by the evening, inbox me the papers which you are reviewing. All headings are present, but sequence is different. Yes, found. All these are found. Okay. Roll number 44. I don't want you to see the reports. I just want you to see any research paper or thesis, right? Find any research paper or thesis. I want everyone to send me paper which you have reviewed. Please inbox me the paper. Don't send me over here, but send it to me personally on MS Teams. All the papers which you have reviewed from your field. The paper I opened have acknowledgement and literature citation at the end after concluding remarks. That's good. In body, you will be having literature review, methodology, results, discussions, right? So that is obvious that you are having literature and all these things. That's good. There was no table of contents and list of illustrations. आपने ज़रूर पेपर देखा होगा रिसर्च पेपर में टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस नहीं होता थीसिस में ज़रूर होता है. That's very good. See, when you know the things और फिर आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो फिर आप कहें हाँ ये तो यहाँ भी है अरे ये तो उसमें अवेलेबल ही नहीं है. So this is how you come to know the things and आप चीज़ों को सीखते हैं लर्न करते हैं. You are now discriminating, you are analyzing. मैम आई विल इनबॉक्स इन इवनिंग बिकॉज आई एम फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं है आराम से जब भी आप उसको देखें एनालाइज करें तो बस उस टाइम पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा. दैट वुड बी इजी फॉर मी टू सी इफ. अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँगी राइट. आज बच्चे ज़्यादा हैं 24. ओके गाइस सो व्हाट यू नीड टू डू. आपने जो भी पेपर ये वो पढ़े हैं और उनको एनालाइज किया है वो आप मुझे करेंगे इनबॉक्स राइट. Operational definitions. वो introduction का part है, right? Definitions are part of introduction where you introduce your topic with definitions. ठीक है. तो आपको मैं अपनी थीसिस भी दिखाऊंगी अपने रिसर्च पेपर्स भी दिखाऊंगी उसके हिसाब से भी चलेंगे और जो पहले बच्चों ने रिपोर्ट लिखी हैं उनमें से भी आपको मैं रिपोर्ट ज़रूर दिखाऊंगी और वही रिपोर्ट दिखाकर मैं आपको सिखाती जाऊंगी क्योंकि अब हम शुरू करेंगे रिपोर्ट्स के जितने भी एलिमेंट है उनको हम करेंगे लिखना स्टार्ट राइट. So I found abstract in report. Yes, you can find abstract in reports. Report on biomass I found and all these headings I found. That's good. Please send me all those reports which you have gone through and please inbox me all those reports. So this was all from today and I hope कि आपने आज जो है पहला कदम रखा है रिसर्च की दुनिया में एंड आई विश यू गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक अहेड कि आप जब भी अपनी लाइफ में रिसर्च करें तो ये सारी चीज़ें जो आप सीखने जा रहे हैं या सीख रहे हैं आपको हेल्प आउट करें. सो वेलकम इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड आई होप योर जर्नी गोज स्मूथ एंड गुड. सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक में राइट एंड हर ये चीज़ जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन है लिटरेचर रिव्यूज़ हैं एंड ऑल दीज थिंग्स उनको जो है हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है जी. इन सारी चीज़ों को जो है हम करेंगे. हाँ मैं सारी चीज़ों को बाद में देखती हूँ आप मुझे प्लीज़ इनबॉक्स कर दें. हम वन बाय वन टाइटल क्या होता है ठीक है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है उसमें क्या लिखते हैं बॉडी में कौन से चैप्टर आते हैं उनमें क्या लिखते हैं सारी चीज़ों को हम फिर करेंगे नेक्स्ट वीक डिटेल से राइट. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. सी यू नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज.